Bismillah Rahman Rahim. I'm Sarah Khan, your instructor for the course Application of Statistics in Psychology with the course code 509. This is our lecture 14. This lecture is the continuation of the previous lecture. We learned in the previous lecture about the two independent sample t-test and also about the independent measure design. There are many situations in which the researcher decide to select the independent sample design in which he or she can compare uh, groups, two separate groups from the separate population uh, to compare the mean of the two groups. For example, social psychologists may want to compare men and women in terms of their political affiliation or the attitude. An educational psychologist may want to compare two methods of teaching, or the clinical psychologist may want to evaluate the therapy technique by comparing the depression scores of the patients before and after the therapy. Independent measure design or the independent measures hypothesis testing allows the researchers to evaluate the mean difference between two populations using the data from two separate samples. Thus, an independent measure design can use to test for mean differences between the two distinct populations, such as men versus women, or between the two different treatment conditions, such as drugs versus no drug. So, by with the using completely separate groups, or the using completely separate group is called an independent Myers research design or between subject designs. The hypothesis testing for such research designs, having the two separate groups, we use the independent sample t-test. These terms involve that there are two separate, completely separate independent samples, and makes a comparison. These two samples make the comparison between the groups of individuals. The structure of the independent measure research design uh, can be shown or the clear from this figure. There are two uh, population. First population A, which is being taught by the method A, and the population B is being taught by the method B. We have no information about the population parameters, neither about the population A nor about the population B. Population parameters means we have no information about the mean of the population, and the standard deviation of the population. Descriptive statistics or the parameters of the both populations are unknown. Now we are want to compare these two populations. We will take the sample from this population, and we also take sample from this population. Uh, then we take we information. It is impossible for us to take the information from whole population A and the whole population B. So we take the samples
or the selected persons from the both populations separately, and these two separate samples then we will compare, and by comparing these two samples we will decide make the decision about the populations that they are different or not. This situation was also discussed in the previous lecture. Today we will demonstrate all the method by the computation of mean and the standard deviation and pooled variance for the calculation of the t value. This is our research situation for the demonstration of independent sample t-test. The research, according to the research situation, there are two samples of the participants that were provided details about the trial in which the defendant was obviously guilty. These participants were the members of the jury, and in this study we want to study the behavior of the jury. Although the group 2 received the same details as group 1, the second group was also told that some evidence had been withheld from the jury by the judge. Later, the participants were asked to recommend a jail sentence. The length of the term suggested by each participant is represented here in this data. These are the responses of the participants of the two groups of the jury. The research question is to test or find any significant difference between the two groups in their responses. In this research situation, we will demonstrate the independent sample t-test. These are the responses of the two groups, apparently, or the visual overview of the two groups is telling that there is some difference between the two groups, but we have to find the significant difference if there exists between the two groups, between the means of the two groups. For the hypothesis testing of t-test, first we will prepare the data for the analysis. The first step to compute the sample mean, and then we will compute standard deviation or the variance for each two groups. There will be two means, two standard deviations or the two variances for the two groups. So we will calculate means, and then also we will calculate the standard deviation so that we can proceed the 4 processes or the 4 steps of the hypothesis testing. These all the values, these all the computations are being used in the computation of the calculated value of the t-test. So first of all, we will calculate the mean from the given data. Mean is equal to summation x over n. Here summation x1 is the total of first group, which is 24, and the number of the individuals in each group is 8. So we will divide this 24 by 8, and we will compute the mean of the first group, which is equal to 3. Then we will compute the mean from the second group, and the second group total, the total of the responses is 48, and
48 is the summation x2, and we will divide for finding or computing the mean from this data. We will divide this value from the number of the individuals, which are 8, and we when divided 48 by 8, the answer is 6. Then 6 is the mean for the second group. In the same way, we will calculate the standard deviation, but first we will find the summation x1 minus x1 bar square, because this is the deviation scores, and these are the squared deviation scores, and we need squared deviation scores for calculating the standard deviation for each group. So first we will calculate mean deviation for the first group. Mean is 3 for the first group, so we will subtract this mean from the each value of the first group. And the first value of the first group is the 4, and we will minus or the subtract x from this value, which will be equal to 1, and 4 minus 3 is also equal to 1, and 3 minus 3 is equal to 0, and 2 minus 3 will be equal to minus 1, and 5 minus 4 will be equal to 1, and 1 minus equal to 2. 1 minus 3 will be equal to minus 2, and 1 minus 3 again will be equal to minus 2, and 4 minus 3 will be equal to 1. There are 3 values which have mean deviation in minus 1, minus 2, and minus 2. We will take the square of these values. The square of 1 is 1, 1 is 1, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही आएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। इसका हम टोटल ले लेंगे, जो कि हमारा समीशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर होगा। So with the same procedure, we will calculate the mean deviation for the second group. The first value of the second group is 3, and the mean is 6, and the minus 3. Second value is minus 7, and 7 and minus 6 is equal to 1. Same way, 8 minus 6 is equal to 2, and 8 minus 5 minus 6 is equal to minus 1. Same way, 3, 7, 8, 4 minus 6
is equal to minus 2, and 7 minus 6 is equal to 1, and 6 minus 6 is equal to 0, and 8 minus 6 is equal to 2. Through this calculator we will take the total of these values. 3 plus 1 plus 2 sorry, first we will take the square of these all values. 9, 1, 4, 1, 4, 1, 0, 4. Okay. Now we find the summation of these values through the calculator. 9 plus 1 plus 4 plus 1 plus 4 plus 1 plus 4. Total of these values is 24. Now we will put these values in this formula. Summation x1 and x1 bar is 16, and we will divide it by 8 minus 1, 7. And have to take so okay. We'll divide 16 by 7 first. Which will be equal to 2.28. We can write it at 2.29. 2.29. Equal to this will be equal to 2. Take the under root of this value 2.29. We will take the under root of this value. Point 2 9. 2.29. Take the
the under root of this value, which is 1.51. 1.51. Okay. In the same way, we will calculate the standard deviation of the second group. (24) summation x2 minus x2 bar square. The squared deviation, the summation of squared deviation is equal to 24, and we will divide it by 7. And have to take also the square root of this value. Actually, there is no symbol of square root in this symbols, that I have to draw the symbol. So 24 divided by 7 is equal to 3.43. 3.43. So we take the under root of this value, three point 3.43 is equal to 1.85. 1.8. जी, ये डेटा हमारा प्रिपेयर हो गया है, जो कि हमने वो वैल्यूज़ कंप्यूट हो गई हैं, जो कि हमने अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट हम वही 4 स्टेप्स जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझे भी हैं और किए भी हैं, उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब भी हमने करनी है वो इन्हीं 4 स्टेप्स के साथ करनी है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। For the independent Meyer test, H0 states that there is no difference between the two populations. In symbols, the null hypothesis for the independent Meyer t-test is equal to null hypothesis mu1 minus mu2 will be equal to 0. For the population, knowing evidence has been withheld, no effect on the suggested sentence. And in the same way, we will also suggest here we will formulate alternative hypothesis for this hypothesis testing procedure. Mu1 minus mu2 is not equal to 0. For the population, knowledge of withheld evidence has an effect on the jury's response. हम चेक भी यही कर रहे हैं क्या चूँकि जो ग्रुप 1 है उसको तो नहीं बताया गया कि जज ने कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ ज़रूरी मालूमात जो हैं वो नहीं बताई,
लेकिन ग्रुप 2 को ये बताया गया है कि जज ने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपा ली है, वो नहीं बतानी। तो हमें ये देखना है कि ये बताना उनके रिस्पॉन्स पर, उनके डिसीजन पर असरअंदाज होता है या नहीं होता। तो यहाँ हम कहते हैं कि नहीं होता, और यहाँ हम कह रहे हैं कि ये चीज़ असरअंदाज हो रही है। Okay, eventually, the alternative hypothesis can simply state that the two population mean are not equal. यानी population 1 का जो mean है और population 2 का mean जो है वो equal नहीं है। ये यहाँ फिर मैं एक दफ़ा वाज़े कर दूँ कि हम hypothesis population के बारे में बनाते हैं, क्योंकि हमें decision population के बारे में करना होता है। और यहाँ hypothesis testing में हम alternative और नल हाइपोथेसिस जो पॉपुलेशन के बारे में बनाते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं बाय टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल विच हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। सो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी और जो हमारा नल हाइपोथेसिस है दोनों को आम पॉपुलेशन के बारे में करेंगे। इसमें हम कह रहे हैं कि म्यू1 माइनस म्यू2, यानी अगर हम माइनस म्यू1 में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप, तो वो 0 के बराबर आएगा, यानी दोनों के मीन एक जैसे हैं, फ़र्क नहीं है कोई भी। और यहाँ हम कह रहे हैं कि म्यू1 माइनस म्यू2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर हम माइनस करेंगे पॉपुलेशन जो फर्स्ट है हमारी, उसकी मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन ऑफ द पॉपुलेशन 2, तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। हम यहाँ पर लोकेट करेंगे अल्फा क्रिटिकल रीजन विद द हेल्प ऑफ द अल्फा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्फ़ा हम यहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं, हमने नहीं किया। यहाँ पे 0.05 अमूमन हम 0.05 अल्फ़ा ही जो है वो सिलेक्ट करते हैं फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्रिटिकल रीजन को लोकेट करने के लिए वी हैव द टू इंफॉर्मेशन, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा एंड देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ हमारे पास दो सैम्पल्स हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम जो हम करेंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो टोटल आएगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सेकंड ग्रुप, इन दोनों को प्लस करके जो भी हमारे पास आएगा वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो यहाँ हम दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस हमारे पास इसकी भी 8 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इसमें भी 8 नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, तो इसमें से 1 हमने माइनस कर दिया या 1 हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, यानी 8 + 8 - 2 इज इक्वल टू 14। 14 के साथ हमारे पास जो अल्फ़ा वैल्यू है वो है 0.05। लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको ये कहा था, लेकिन यकीनन कहा था कि मैं आपको टी टेस्ट का टेबल जो है विजुअलाइज कराऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इधर जो है वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं अल्फ़ा लेवल की, ठीक है। ये हम 1 टेल और 2 टेल के लिहाज से भी लिखी हुई है, वैसे वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, तो हम उन वैल्यूज़ को देखते हुए अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ देखते हुए, और इधर DF है, जैसे कि हमारा 14 DF है, तो हम इधर से इसकी वैल्यू मालूम करेंगे 0.025, क्योंकि हम 2 टेल इस्तेमाल कर रहे हैं,
इसमें हमारा जो क्रिटिकल रीजन है दोनों टेल्स में होगा। अल्फा लेवल हमारे पास 0.05 है, और जब 0.05 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.025 आंसर आता है। तो 0.025 जो है हमारा क्रिटिकल रीजन या जो है रिजेक्शन रीजन जो है वो इस साइड पर होगा, इस टेल में होगा, और 0.025 जो है वो हमारा इस टेल में होगा। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में टू टेल टेस्ट में इसको देखते हैं विद DF14, तो ये वैल्यू हमारे पास जो टी की टेबुलेटेड वैल्यू आती है वो प्लस 2.145 एंड माइनस 2.451, ये हमने क्रिटिकल रीजन बनाया हुआ है। ये देखिए इधर हमने -2.125 लिखा हुआ है, और इधर हमने ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है कि ये इस वाले को के बाद 7 था तो हमने इसी को 5 कर दिया 2.145, क्योंकि हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा हमने लोकेट कर लिया अपना क्रिटिकल रीजन। ओके, अब जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमने इस्तेमाल करनी है वो ये इसी तरह से है, वही फार्मूला है। हमने वन सैम्पल टी टेस्ट में जो मीन था सैम्पल का, उसमें से हमने पॉपुलेशन मीन को माइनस किया था। यहाँ हम दोनों ग्रुप्स के जो मीन डिफरेंस है उसको हम माइनस करेंगे, जो दोनों ग्रुप जो पॉपुलेशन के हैं, दोनों पॉपुलेशन के जो मीन है उसमें से। ये हम हाइपोथेसाइज कर चुके हैं कि ये इक्वल टू 0 है, तो और यानी हम ये इसकी तो फिर -0 करेंगे तो ज़ाहिर है कि हमारे पास सिर्फ जो हमारे सैम्पल्स हैं उसके मीन डिफरेंस रह जाएगा। मीन डिफरेंस को हमने डिवाइड करना है स्टैंडर्ड एरर से, और पहले हम स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर लें। स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है पूल्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय n1 प्लस पूल्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय n2 और फिर उसका अंडर रूट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। यानी स्टैंडर्ड एरर को हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें पूल्ड वेरिएंस चाहिए। यूजिंग द पूल्ड वेरिएंस इन प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल सैम्पल वेरिएंस वी कैन नाउ ऑब्टेन an unbiased measure of the standard error or the sample mean difference. This resulting formula for the independent measures estimate the standard error in this way. So first we will calculate the pooled variance which is necessary for the calculation of the standard error, and standard error is being calculated for the calculation or to calculate or to compute the value of t statistics. ये फॉर्मूला है पूल्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए। हमें जो हमारे पास पहला ग्रुप है उसका स्क्वायर ले लेंगे, या हम फर्स्ट ग्रुप का वेरिएंस भी इसे कह सकते हैं, और उसे उसी ग्रुप की जो DF है यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे या हम वेरिएंस लेंगे, एक ही बात है। तो उसे भी हम उस ग्रुप की जो DF होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को प्लस करके हमने डिवाइड करना है इसे दोनों DF यानी फर्स्ट ग्रुप की DF और सेकंड ग्रुप की DF को प्लस करके जो अमाउंट आती है उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की फॉर द ग्रुप 1
इज़ 1.52। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये हमने कैलकुलेट की, ये देखिए 1.52। तो इसका हम वहाँ स्क्वायर लेंगे। उसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट की है वो 1.85 दी है। तो इन्हीं दो चीज़ों को हम यहाँ पर 1.52 एंड 1.85, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 7 है, और इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी 7 है। तो और इसे डिवाइड करना है हमने फर्स्ट ग्रुप की डीएफ और सेकंड ग्रुप की डीएफ के को प्लस करके। तो जब हमने इसका स्क्वायर लिया 1.52 का तो ये 2.31 आया, और इसे जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 16.17 आ गई। इसी तरह से हमने 1.85 का स्क्वायर लिया और उसको 7 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर जो वैल्यू आई वो आई 23.94। और जब हमने 7 और 7 को प्लस किया, यानी फर्स्ट ग्रुप की डिग्री ऑफ फ्रीडम और सेकंड ग्रुप की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनको हमने प्लस किया, तो हमारे पास 14 आ गया। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 40.11 आ गया। और इसे हमने 14 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो पूल्ड वेरिएंस की जो वैल्यू आई है वो 2.865 आई है, या हम इसे सिंपली 2.85 भी कह सकते हैं, 2.85 भी कह सकते हैं जी। ये हमारे पास पूल्ड वेरिएंस की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी मदद से स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड एरर को कैसे हमने कैलकुलेट करना है ये हम पहले भी लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हमें पूल्ड वेरिएंस को डिवाइड करना है जो पहला ग्रुप है उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर, और इसी तरह से फिर हमने प्लस करना है, प्लस का निशान डालना है, और फिर हमने सेकंड ग्रुप के लिए पूल्ड वेरिएंस को डिवाइड करना है सेकंड ग्रुप के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर, और फिर उसका अंडर रूट ले लेना है। हमने यहाँ ऐसा ही किया है। हमें पता है कि हमारी जो पूल्ड वेरिएंस कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है 2.865 आई है, और इसे हम 8 से पहले ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स की तादाद जो 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से फिर हम पूल्ड वेरिएंस यहाँ पे लिखेंगे, और उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हम उसको डिवाइड करेंगे उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया अपने अपने ग्रुप के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर, तो हमारे पास पहली जो वैल्यू आई वो आई 0.358 और दूसरे की आई 0.359, और इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 0.716, और जब हमने अंडर रूट लिया 0.716 का तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट होकर आया वो उसकी वैल्यू है 0.85। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेटेड है, हमारे पास दोनों ग्रुप्स के मीन्स भी कैलकुलेटेड है, तो हम टी की वैल्यू जो है वो आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। टी का जो फार्मूला है, हमने दोनों ग्रुप्स के मीन्स को में से एक पहले मीन में से दूसरे मीन को माइनस करना है, और फिर माइनस करना है हमें पॉपुलेशन जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया है। तो नल हाइपोथेसिस के मुताबिक पॉपुलेशन मीन्स में कोई फ़र्क नहीं है, विच इज़ इक्वल टू 0। जो हमारा ग्रुप 1 है उसका मीन 3 है, और जो हमारा ग्रुप 2 है वो उसका मीन जो है 6 है। जो और इसी तरह से अगर ये 0 है हमारे पास तो -0 अगर हम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब 3 में से 6 निकाला तो -3 डिवाइडेड बाय
स्टैंडर्ड एरर 0.85 और वैल्यू हमारे पास आ गई -3.53। जी, हमारे पास क्रिटिकल रीजन भी आइडेंटिफाइड है और ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन जो है वो आइडेंटिफाइड है और हमने टी की कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है -3.53 उसे हमने इस क्रिटिकल रीजन में देखना है कि ये कहाँ लाया करती है। तो ये तकरीबन यहाँ करके लाइक ये -2.14479 है। तो जो टी की कैलकुलेट वैल्यू है वो तकरीबन यहाँ करके ये नहीं है, वो हमारे क्रिटिकल रीजन में लोकेटेड है और क्रिटिकल रीजन में लोकेटेड होने का मतलब है कि ये रिजेक्शन रीजन में लोकेटेड है, रिजेक्शन रीजन फॉर द नल हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव जो हमारा हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखते हैं जी, हमने द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ -3.53 falls in the critical region of the left tail. Therefore, the null hypothesis is rejected. The participants who were informed about the withheld evidence gave significantly longer sentence. और इसी तरह से हम टी को रिपोर्ट करते हैं। टी के आगे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं और जो है टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू लिखते हैं और फिर बताते हैं पी इज़ लेस दैन 0.05। अब हमें ज़ाहिर है इसी वैल्यू से इसी की हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी टू मेजर द इफेक्ट साइज ऑफ विद द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो फार्मूला वही है, मीन डिफरेंस को हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है बिकॉज क्वांटिटी कंप्यूट और measure the effect size with respect to the standard deviation of the data. So इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास M1P से कह सकते हैं 3 - 6 है और इसे हमने डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से जो कि हमने मालूम की थी कितनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे हमारा पूल SP का हम इसकी कैलकुलेशन लेंगे। ये हमारे पास वेरिएंस है 2.865 जिसे हम 2.85 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है, SP स्क्वायर है। इसको अगर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस यानी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट जब हम लेंगे तो 2.85 का अंडर रूट आता है 1.688 1.69 हम इसे कह सकते हैं 1.69। तो 1.69 को हम 1.69 जी we will ignore the sign 1.69 is equal to, अगर हम 3 को
written carbon chemical factor. Okay, 3 divided by 1.9 or 6, which is equal to 1.53. 1.53 कोहन स्ट्रीक की वैल्यू जो है वो 1.53 है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 0.8 या इससे ज़्यादा अगर वैल्यू हो कोहन स्ट्रीक की तो हाई इफेक्ट साइज होता है। तो यहाँ पर इफेक्ट साइज जो है वो हाई है, और इसी तरह से हम इफेक्ट साइज R² की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ T की वैल्यू 3.53 है, आई थिंक, यस 3.53 को हमने डिवाइड करना है, सॉरी 3.53 इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर 7 plus df, which is 14, 7 plus 7. ओके, अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 3.53 का 3.53 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 12.46 divided by 12.46 plus 7, oh sorry 14 plus 14. तो 12.46 में प्लस करते हैं हम 14 प्लस 14 12.46 divided by 26.46 which is equal to 12.46 is divided by 26.46 is equal to 0.47. Okay, this is the value of R square.
और इस वैल्यू को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 47 आता है, यानी 47% जो है वो वेरिएंस इज अकाउंटेड फॉर डीवी बाय आईपी। ओके, तो यहाँ हम कहेंगे कि 47% जो ग्रुप 2 को इंफॉर्मेशन बताया गया कि रिजल्ट का रीजन है, उस चीज़ ने असर डाला है 47% ऑन देयर डिसीजन। तो ये हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू थी जी। और ये आपके लिए एक्टिविटी है, ये पूरा एक सिनेरियो है और उसकी ये वैल्यूज़ हैं दी गई, और ये क्वेश्चन है, डू द रिजल्ट्स इंडिकेट द 7-foot difference in the stride length for the two groups, use the two-tailed test with alpha 0.05, and these are the references. You can also take help from these books by reading the concerned chapter. All the queries and the questions will be handled in the course, inshallah.